सिरविजीचो हो मेजर इशू आसा आनी आयज आख्या आमी मुर्माको कॉन्स्टिट्युन्सीन सगळे कडेन जी सिरविजीची लायन्स आसा ती आमी चेंज करपाक लागून घेतलेली आसा कित्याक मेन म्हणटा ते आमी पळयता कितें ही ओवरफ्लो जावपाक लागलेली आनी सगळे कडेन ब्लॉक जावन आसा आनी ही जी लायन आसा ती खूब पयलींची म्हळ्यार ऑलमोस्ट 25-30 इयर्स पयलींची आनी हेजी डाया जी आसली ती 1.5 आसलेली जी ओल्ड आसलेली सो ते सगळे चेंज करून तेजे लागून आयज आमची लोकबस्ती वाडलेली आसा आनी तेजे लागून ही डाया वाडोवन आमी ती अरावंड 2.7 केल्लेली आसा सो ही न्यू जी घालतली पळय तेज्या भितर इट इज अ व्हेरी लॉंग लेंथ टोटल एस्टिमेट कॉस्ट इज 1.75 सो एक 1.75 लाखाचो तेजो एस्टिमेट आसा आनी इट इज नॉट आमचे फक्त हेजे लागून न्हू आयज आमी तुमी पयला आसतलें रायट फ्रॉम सडा टू जेटी टू बोगदा टू देस्तेरो टू बायणा म्हणजे सगळे जितले वॉर्ड्स आसा सगळे वॉर्ड नंबर 1 टू वॉर्ड नंबर 9 आमी टोटली जी सिरवेज लायन आसा ती न्यू केल्लेली आसा तेज्या लागून हे आमी हातीन घेतलेले आसा आनी म्हाका दिसता जे एवरी इयर पावसाच्या टायमार जे ओवरफ्लो जाताले ब्लॉकेज जाताले हे फुडें जावपा ना आनी जी सिरवेज सिस्टम आसा ती डायरेक्टली आमची जी आसा ती लिंक आसा ती आमचो एसटीबी प्लांट आसा थंयसरूय आमी ताका लिंक केल्लेले आसा सो म्हाका जाय आसलें कितें बाबा जितले लोकांनी हेजो सिरविजीचो जेंचे कडेन कनेक्शन ना तांकां आमी न्यू कनेक्शन घेवपाक प्रोत्साहन करपाक लागलेले आसा जेंचे कडेन टॉयलेट ना तांकां न्यू टॉयलेट्स दिवपाक लागूनय आमी प्रयत्न चालू आसा सो हे जे स्वप्न आसा आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी कितें बाबा सगळ्यांच्या घरांत टॉयलेट आसचे आनी सिरवेज म्हणटा ती एक इम्पॉर्टंट कित्याक आयज आमी पळयता सगळे कडेन सो एज फार एज मुर्मगांव गोवा इज कन्सर्न आय एम व्हेरी थँकफूल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत ज्यांच्या लिडरशिपाच्या अंडर आयज मुर्मगांव गोवान जी आमची ओल्ड लायनी असलेली जी फक्त 1.5 डायाची असली ती सगळी रिप्लेस करून आमी ऑलमोस्ट 2.7 3.5चेर येयल्लेले आसा सो म्हाका दिसता कितें जो सिरविजीचो इशू आसा तो कंप्लीट आनी हो म्हाका दिसता लास्ट पॉयंट आसा वॉर्ड नंबर 9 म्हाका दिसता हो बिफोर मनसून हो आमी कंप्लीट करतलो आनी तेज्या लागून ही जी कॉन्ट्रॅक्ट आसा तो जिप्सन म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका मेळ्ळो आसा आनी ताका सांगला कितें हे फुडल्या 2 म्हयन्या भितर बिफोर मनसून ते कंप्लीट करपाचें म्हणून आनी आयज आमच्या मदीं आमचो सिरवेज कॉर्पोरेशनाचो टीए वांगडा आसा बाब आमचो तन्मय तशेंच आमचो मंडळ अध्यक्ष मुरगांवचो बाबा एडवोकेट अविनाश नायक आमचो जनरल सेक्रेटरी वॉर्ड आनी तसोच वॉर्ड नंबराचो आमचो स्थानीक बाब दिपक माशेलकर तशेंच म्हाजे सगळे बाकीचे ऑफिस बेरर आमचे बूथ अध्यक्ष जे हांगा सगळे उपस्थित आसा आमचो सुरेश राजपूत साजीद फैजुल्ला अशे सगळे जाण सगळ्यांनी एक व्हड संख्येन ते हांगा उपस्थित असलेले कित्याक हेज्या वरसून कळटा की हो इम्पॉर्टंट इशू आसलेलो जो लोकांक हो इशू सॉर्ट आवट जाल्लो जाय आसलो आनी इतलेंच कितें हे फुडें ही जी ब्लॉकेज आनी जी आमची ओवरफ्लो जाताले ती जावपा ना इतलें हांव हे एश्युरन्स दिता एरिया सदींच निग्लेक्ट जाल्लेली आसली सर येयल्ले पळयता की खुबशे लोकांक दिश्टी पडटा डेव्हलपमेंट खुबशे रस्ते आमचे केन्नाच खूब वर्सां जाली 30-40 वर्सां जाली रस्ते जावंक नासलेले सेवरेज कनेक्शन पावस येते की ओवरफ्लो एवरी टायम कित्याक की लोकवस्ती वाडल्या कारणान ते हे नासलेले लोकांक आनी ओवरफ्लो जावन जी वास आनी तांकां हेल्थाक हेजिटेट जाल्लेले तेज्या खातीर प्रॉब्लम आसलेलो सर येयल्ले खुबशे इशू बायणाकारांचे घेता सर सॉल्व करपाची ट्राय करता तशेंच आतां फिशरमॅना खातीर नेट बायंडींग शेड घेवपाचे आसा खुबशे प्रोजेक्ट येवपाचे आसा आनी आमचे सगळे बायणाकारांक खूब लागचे आमकां आमचे तेंचे जितले प्रॉब्लम आसा ते सॉल्व करपाचे एवरी टायम आमी हे करता कोशिश करता आनी हेज्या फुडें बीन जातले सगळे तेंचे सिवेजाचो प्रॉब्लम आतांसून न्हू पयलूसून ना आनी इतली वर्सां आमी हांगा रावता सिवेजाची केन्ना कोणें दखल घेवना आनी ते तशीच आसताली अख्खे आज हांगा जितले लोक आहा हेंच्यांनी आमकां कंटिन्यूस आमकां कंप्लेंट आसताली ते भारत आसूं हांगा आसूं सिवेजाचो इशू आसतालो तो कोणेच केन्ना घेवना आयज सरान जेन्नासून चेअरमॅनशीप घेतला SIDC जेलाची तेन्नासून आमकां एक व्हडलो सुशेग मेवला तेन्ना आमकां बिंदास लोकांक आमी प्रॉमीस करपाक शकता आमी करपाक शकता म्हणून ते आयज जो सरान इनिशिएटीव घेतला तेका लागून हांव खरेंच मनासून तेका थँक्यू म्हणटा आनी अशेंच फुडें हे काम जावपा तुमी बायणाच न्ही तुमी अख्खे वास्कून पळयला आसलो सगळे कडेन कामां चालू आहा तो सरान फूल इनिशिएटीव घेतला आनी तेणी अशेंच काम करून सगळ्यांक आमकां अशेंच हेल्प करपाचें मेन हो सिवेजाची इशू असो सॉल्व जावत रावल्या पुरो थँक्यू 60 साल से रह रहा हूँ और हमने देखा है कि इस एरिया का जो भी इश्यूज था सेवरेज का तो बड़ा इश्यूज था बारिश में तो बहुत ही दिक्कत होती थी आज ये सेवरेज का जो डेवलपमेंट होने जा रहा है बहुत ही बेहतरीन काम है और आमोनकर साहब आने के बाद इस एरिया में बहुत सारे काम होने लगे हैं
मैंने बहुत सारे पॉलिटिक्स देखे हैं मैंने मेरे लाइफ में, क्योंकि 60 साल में मैं इसी एरिया में रह रहा हूँ। तो मैंने जितने डेवलपमेंट हाल ही में देखते आ रहा हूँ उतना डेवलपमेंट तो किसी ने नहीं किया है। यहाँ पर देखिए हमारे फिशरमैन भाई लोगों के लिए नेट बाइंडिंग सेट्स हो और बहुत सारे काम होने जा रहे हैं, बाकी के और बहुत सारे काम यहाँ पर होने जा रहे हैं। ये हमारे लिए एक प्रगति है। तो हमें हमारे जो एमएलए साहब हैं इनके साथ रहकर जो भी वो उन्नति कर रहे हैं, जो भी प्रगति कर रहे हैं, उनका साथ देना ये हमारे सभी यहाँ के वार्ड के जितने भी लोग हैं इनका दायित्व है। यह कहकर मुझे यहाँ पर बुलाया गया, जो बातें कहने के मौका दी गए, सभी को धन्यवाद। की इतले वर्ष झाली 20-25 वर्ष झाली की हे अजून सॅवरेज प्लांट चेंज करून असले। या वर्सा सरान इनिशिएटिव्ह घेऊन हे जे सॅवरेज प्लांट चेंज करपाचे दायित्व घेतला ते इज व्हेरी सक्सेसफुल आसा। आणि अशें सांगूंक सोदता की सराक मातशें हेल्प करपाक जाय हे सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता। सराक देव बरें करूं। थँक्यू।